अस्सलाम वालेकुम। सख्त रात के 1 बज रहे हैं यहाँ टेक्सास में, ह्यूस्टन में, और वी आर स्टिल शूटिंग फॉर खुदा और मोहब्बत. दिस इज़ आवर सेकंड लास्ट डे एंड I'm with my team. See, they're outside and I'm sitting in my car. Kubra is there with Saad and Wazir Saab is there. So there's you can see the level of dedication we have for this project. It's been wonderful working with all these people. We started our shoot on the 20th of April from Lahore, and now we're here ending up the season 2 in Houston, USA. So this time you'll find lots of new characters and lots of new twists and turns in the story. Khuda Aur Mohabbat is definitely one of the biggest hits of Pakistani drama industry, and people have been expecting and anticipating the season 2. You're not changing, right? But this time, come. But this time I'm live. Yeah. I was like, wait, I literally looked at you. Oh, sorry. Yeah, Shizra is here. So yeah, I'm Kante. Yeah. So I was telling that Khuda Aur Mohabbat is one of the biggest hits of Pakistani drama industry, and people have been anticipating for the season 2 for past 4 years, ever since the first season, Khuda Aur Mohabbat का पहला जो season था, ended up. उसके बाद से I've been constantly receiving calls, messages, emails, and I don't know what. Every single fan of mine, no matter वो कौन से मुल्क में है या कहाँ वो रहते हैं, every single person, every single fan of mine has been asking me about the season 2, and now finally we have ended up the season 2. We are about to end it tomorrow. लेकिन इतनी ज़्यादा anticipation मैंने कभी अपने किसी project के लिए नहीं देखी. So I'm very excited that it's about to start in a couple of weeks from now from Geo. Let me introduce you again to the beautiful Shizra Hussain. She is the one who is playing one of the very important roles in season 2. She's from US, from Chicago. She's a very famous model here. A couple of days back, she opened HSY ka show here in Houston, and I was the show star. She's playing the role of a girl who's very possessive about this boy, and she has a very interesting character. A girl who loves someone and gets insecure, and finally she ends up doing something which okay, I don't want to reveal the story now. Yeah, but she's playing a very, very important character. Okay, so wow, 93 people are watching me. 93, yeah, great. Okay ji, let me just start going through the messages. Okay. Hi, good morning, Juvenile. She's Juveline North. Okay, Eamon Rajput, Sakina Fatma. I cannot read all the messages because there are many. I'll just scroll down quickly and at least start calling your names. Khyam Ahmed, Salam Imran, Walaikum Salam. Zulfi Sheikh, Hi Imran Bhai, thank you. Kaise hain? I'm good. Abdu Khan, hi. Nisha Mughal, hi, how are you? Abdu Khan again. Salam. Is there any role of yours in Adil Mushkil? Yes, in Adil Mushkil, I'm playing a small cameo with Anushka Sharma and Ranbir Kapoor. It's a very funny, cute guest appearance. It's not a very important character, but lots of big actors are playing some very small cameos in the film. So Karan Johar made sure to cast all good actors to even play small roles in the film. So every actor, even Shah Rukh Khan, there's so many actors who come in the film and they go quickly, but they just become a part of the team because Dharma is definitely a very good production house, and all the people who are playing some characters in the film are big names. So it was good fun working with Anushka Sharma and Ranbir Kapoor and Lisa Hayden and of course Karan Johar. So I had a great time, yes.
But you shouldn't call me. You shouldn't call this film as my film because it's of course Ranbir Kapoor and Aishwarya Rai and Anushka Sharma's film. So yeah, but I am a part of the film. Yes, and there's a song which is a very very interesting song. It's a party number. It's about breakup. So yes, keep your fingers crossed. Okay, Ujala Chaudhary, hey, hi, texted for the first time in the live chat. Okay, thank you, welcome. Sine Alimse. Okay, I would appreciate if someone is texting me from or writing me or sending some message from any other country to write down to jot down the name of your country as well with your message, so it'll be easier for me to at least figure out which country are you sending these messages from. Okay. Okay. Adil Malik, you look mesmerizing. Thank you, Sakina Fatma Sayyed Orni. 128. Wow. Okay, so I think it must be 9 in the morning, no, 10 in the morning in Pakistan, right? So you guys are up. Good. Your voice, tuck 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 tuck. Okay, love. Sir, you are my favorite. Say the man. Thank you so much, Haji. Muhammad Sishan, you're awesome. Talha Iltija Arjain, Princess Mughal. Me from Pakistan, Zahid Hussain. Okay, Zahid Hussain, you're the first one who is obeying, who at least followed which I said. Not obey, of course. Who am I to order you something? Hamad Rahman, Kingdom of Saudi Arabia, Maqsid Anwar. Okay, from India, who is Mansi Yadav? Okay, Maya Shahrukh Khan, Maya SRK. Okay, love. Okay, Australia se Gabriel Rahmatullah. Abdu Khan is from, I don't know, Peshawar. Okay, Mustafa Kamal from, okay, Zahid Hussain looking awesome. Thank you. Sir, mention my name, Hamad Rahman. Okay, Hamad Rahman, I'm calling out your name. Please sing a song for me. I just love your voice. Okay, I'll sing it in the end if I get time. Actually, I'm just waiting for my call from the director because they're waiting for some lighting. I think they're getting it done. So I'll be finishing up my chat any minute. So till then, yes. Shazre, what do you want to say about Khudar Mohabbat and how's your experience working with us? I love working with Imran. This is my second project, second drama, and I love this team. I love our director, Sayed Ali Raza Osama, and Imran Abbas has been such an awesome support person. Seriously, I thank you so much because I think, if anything, if I've improved, it's because of you. Oh, that's so kind of you to say, seriously. Yeah, so definitely watch it. I really like our characters that we're all playing. The story is really awesome. I love the ending. Yeah, yesterday we shot the ending, and it's the spiritual element of the serial, which is very sublimed, I guess. Khudar Mohabbat is definitely a play which is catering or targeting the masses or the general audience, but it has something which is very very substantial between the lines, and I think that is the spirituality. Love is not only about loving your lover. It's all आपकी जो असल मोहब्बत होती है जो आपकी अल्लाह के लिए होती है, और बाज़ दफ़ा इंसान जो होते हैं वो उसके वसीला बनते हैं. So this is the basic I think basic philosophy or the basic concept of the play, which is very very important. And I must say that a writer has written the story in a very very beautiful way this time. पिछली दफ़ा जहाँ बात अधूरी रह गई थी वहाँ से हमने सिलसिले को आगे जोड़ा है, और जब उसका एक लॉजिकल एंड होता है तो वो यही होता है कि मोहब्बत सबसे बड़ी जो होती है वो अल्लाह के लिए या अपने गॉड के लिए या जिस भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हैं उसके लिए. ओए this is the person. He's my brother, my friend, my support system here in US. Fahd Rahmani, he's the one who assisted us. He himself is a very very good director, जो कि UCLA से ग्रेजुएट हैं, लेकिन उन्होंने इस दफ़ा अपनी सारी काबिलियत और सब कुछ हमारे खुदा और मोहब्बत के लिए दिया. तो इस वक्त जो आपको वाईफाई से मैं जो इंटरनेट से कनेक्ट हुआ वो उन्हीं के फ़ोन से हुआ वो हॉटस्पॉट से, बिकॉज माई इंटरनेट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, सो आई एम नॉट लेटिंग हिम गो. आप नहीं रहना. Hi everyone, and I'm not going anywhere. I'm right here. You guys stay in touch with Imran. Yeah, 173 fans of mine are online, so don't you dare go anywhere. Fahd Rahmani.
ओके जनाब, कहाँ थे हम? हाँ, तो खुदा और मोहब्बत की बात हो रही थी। तो ये है ज़फ़ा खुदा और मोहब्बत का, और यस विल कम अप विद द सेम सॉन्ग, विद द सेम करूँ सजदा एक खुदा को, पढ़ूँ कलमा या मैं दुआ दूँ. So the same number, the same track would be the OST of the Khuda aur Mohabbat, but again it will be improvised. It will be technically more sound and more balanced, and although बस चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमने कोशिश की है कि उसको भी थोड़ा सा और पॉलिश करके आपको और उसका एक एडिड वर्जन आपको सुनाएं. जी सर. ओके, लेट्स get back to the chat. 184, thank you so much 184 fans or friends, what should I call you? You are my friends, of course. So thank you so much all of you to be there and to support me ever since जब से मैं काम कर रहा हूँ. Oh my god, लाइट बंद हो गई. ये लीजिए जी. Beautiful Yarima Maya SRK, we love Imran in Iraq, please visit. So you're from Iraq, okay. I would love to come to Iraq one day. ज़ियारतों पे आने का मुझे बहुत बहुत शौक है. कभी बुलावा आया तो ज़रूर जाऊंगा जी. सईद इमरान, आपको हमारे मैसेजेस मिल रहे हैं या नहीं? बिल्कुल मिल रहे हैं जनाब, बिल्कुल मिल रहे हैं. एक्चुअली I'm very bad at going through keeping my pace with all the messages. I'm a slow reader, and of course I cannot answer every single मैसेज. पर्सनलाइज्ड मैसेजेस जो होते हैं वो मुझे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि बहुत सारे हैं, सो सबके नहीं पढ़ सकूँगा. व्हेन दे आर कंटिन्यूसली कमिंग. जनाब अलीज़ा गफ़ार से प्लीज़ से अलीज़ा गफ़ार फ्रॉम लंदन. ओके अलीज़ा गफ़ार. ख़याम अहमद, आपका एक और सीरियल में देखता हूँ, तुम कौन पिया. ब्यूटीफुल, थैंक यू यार. तुम कौन पिया इज़ अ वेरी वेरी गुड सीरियल. We love you a lot, Manisha. Thank you so much. Mahrukh Zaidi, please call me my name and say hi. Mahrukh Zaidi, hi. Jaffa, where are you now? I'm in Houston. See, we are shooting on the roads of Houston for Khuda aur Mohabbat season 2. This is the way we work, and this is the level of dedication we have for work. See, it's 1 o'clock. And normally, no, rather 1:30 or 2 probably. So people normally sleep at this time of night. But we are dedicated to work to give you the best. And the way we have actually worked for this serial is unbelievable. Yes, खुदा और मोहब्बत के लिए हमने जो लाहौर में काम किया है, in the hottest of climates, in the hottest of climate, in the most difficult of most hardest, toughest of circumstances. इतने बुरे हालात में हमने शूट को कंप्लीट किया है. गर्मी थी, तेज़ धूप थी, एंड आई हैड टू वेयर द वुलन शॉल. वो नहीं थी, मोटी वाली शॉल होती है, बिकॉज वी हैड टू शो द विंटर सीजन टू द ऑडियंस. तो उसके लिए इतनी मुश्किल से, और गर्मी में, स्टेशन की गर्मी आपको पता है, धूप भी थी, 47 डिग्री से क्लाइमेट के अंदर हमने शूट किया. और इवन ह्यूस्टन इज़ नॉट वेरी प्लेजेंट दीज डेज. गर्मी होती है, ह्यूमिड होता है, बहुत ज़्यादा क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी होती है उसमें, बट काम करना पड़ता है. क्या कहेंगी आप? Exactly. Shazray, you are in. I'm literally literally in the dark. Yes. So it becomes very difficult for us to, and at the same time we had to look good, which at times become very very difficult for us. Sweating. When you're sweating, and when you break out like this, गर्मी में. He still looks flawless. So लेकिन करना पड़ता है, अच्छा भी दिखना होता है. कोशिश तो बहुत करते हैं, फिर नहीं दिख पाते, क्या करें. अब आप जैसे खूबसूरत तो नहीं है हम लोग. Could you speak Punjabi? यार मैनू पंजाबी आंदी ते है. But although I spent my whole life in Punjab, because Islamabad is in Punjab region, so I grew up in Punjab, Islamabad. Then I went to NCA for my formal education in architecture. But I'm not a very good Punjabi speaker. I don't know, and I don't feel very good about it, because मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मुझे पंजाबी अच्छी होनी चाहिए थी, इसलिए कि I love पंजाबी. It's a very very powerful language. और मुझे लगता है कि पंजाबी के अंदर बहुत डेप्थ है, एंड
it's very intense. So ये मेरी नाअहली है कि मुझे पंजाबी इतनी अच्छी नहीं आती, बट मैं कोशिश तो करना कि मैंने पंजाबी आए. If उर्दू इंग्लिश का होता है, sorry. But yes, I keep trying to be more fluent in Punjabi. But yes. Gary Sharma, when your next Bollywood coming? When my next Bollywood coming? My next Bollywood coming very soon. Bollywood ji, maybe abhi I've signed another film, which will be starting I think by the end of this year, and I think it should be releasing by the mid or probably by the second quarter of the next year. यार what about बड़ी ईद? अब बड़ी ईद मैं वाशिंगटन में करूँगा जी अपनी सिस्टर के साथ. Say my name, Maida Rizvi. Okay. Please say my name, Salma Mohsin, Zulekha Tariq. You're Punjabi. Please इस चीज़ से निकल आइए कि कौन पंजाबी है, कौन बलोची है, पठान है. We should have a single identity. Unanimously हम सबको ये कहना चाहिए कि we're पाकिस्तानी. ये क्यों शजरे में सही कह रहा हूँ ना? Exactly. ये बहुत ज़्यादा हो गया पंजाबी, पठान, बलोच. एक ज़माने में हम सब अपने आप को पाकिस्तानी कहते थे. अब हम अपने आप को पता नहीं किन चीज़ों में हमने बांट दिया है. सुन्नी, शिया, पंजाबी, ये वो सब कुछ, बलोची, सिंधी. आई थिंक वी आर मुस्लिम्स एंड वी आर पाकिस्तानीज. आई थिंक दैट शुड बी आवर फर्स्ट आइडेंटिटी एंड आवर प्राइड. वी शुड टेक इट एज अ प्राइड. अच्छा, ओके. सलमा मोहसिन, ये अच्छा, ये ओके. फाइन. ये यासिर तकी, जियो जी. Okay, love from KPK. खुदाए पामान. Rahila Asad, Pakistan Zindabad, of course. Pakistan Zindabad. Shazre, Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Yes, Shazre, you're looking horrible by the way. This I Dracula know. light is making you Terrible look light. very, very scary. I'm in a shadow. Okay. I love you drama. Dile Mustaran Alvida. I'm writing again. Meher, okay जी मेहर, thank you मेहर. मैदा रिजवी, फिर मैदा रिजवी ने ये बोला. ओके, पता नहीं ये क्या हैसियत है ये का बैकग्राउंड. जुहाद अथर, प्लीज सिंग अ सॉन्ग इमरान. ओके जी, इतनी अब आप लोग फरमाइश कर ही रहे हैं तो मैं गाना गा देता हूँ. कौन सा गाना सुनेंगे आप लोग? लव फ्रॉम इंडिया, सना खान, थैंक यू. गाना मैं आपको सुनाता हूँ, चलिए. गाना 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 बताइए, ठीक है. इमरान, प्लीज से माय नेम. मरियम शहजादी, मोहम्मद एहतिशाम, हेलो फ्रॉम पेशावर. बिलाल अवान, सुपर 248, सुपर 248 फैंस. प्लीज सिंग अ सॉन्ग इमरान ब्रो. आई एम जुहद ओके फ्रॉम इंडिया. हाय जुहद, गाना बताइए कौन सा गाऊँ मैं? फिर आपको कौन सा अच्छा लगता है? मुझे तो भाई पुराने ज़माने के गाने आते हैं, अपने ज़माने के. तो मुझे तो ज़्यादा और भी बहुत पुराने आते हैं, रफ़ी साहब के और किशोर जी के और लोगों के. सो मोहब्बत, खुदा और मोहब्बत का गाना. Yeah, I think this is more apt to sing this song now because it's all around us. It's surrounding us all the time. So yes, हो जाए. यार लिखना तो रोके आप लोग. एक सेकंड में किस तरह पढ़ूंगा सारे के सारे मैसेजेस. Please give it a halt. पढ़ूं आयत कोई सूरत, खुदा के नाम का कलमा, वो ईमान है, मोहब्बत है, जुनू है या हकीकत है. मेरा क़िबला तू काबा है, मेरा ताबीज़ मन्नत है, खुदा के नाम. ये है कुबरा खान. कुबरा, अस्सलाम वालेकुम. कुबरा भी इस वक्त अपना एक शॉट देकर आई हैं. और देखिए आपके रात के 2-2:30 बजे हम लोग रोड पे खड़े होकर सड़कों पे घूम रहे हैं, सड़कों सिर्फ शॉट्स कर रहे हैं. हेलो थाईलैंड. ये जी सेकंड लास्ट हमारा डे है एट द शूट ऑफ खुदा और मोहब्बत. एंड सी द लेवल ऑफ डेडिकेशन वी हैव
for this project that we are shooting पागलों की तरह काम at कर रहे हैं। Saad Qureshi is coming up. कुरैशी जो है ना इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर बना हुआ है। चलें चलें आ जाएं, आपका शॉट रेडी है, चलें आ जाएं। केस देखिए। नंबर 22 का हाँ सीन 17। चलें चलें आ जाएं आ ये जाएं। सीन पढ़ के ना सुनाते मुझे डर ही लगता है इससे सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। Are they actually calling me? मैं असल में बुलाने आया हूँ। असल में बुलाना है। चलें जी, मेरा शॉट रेडी है और मैं आपसे शॉट के बाद शायद मिलूँ शायद ना मिलूँ, डिपेंड्स। लेकिन ये साद कुरैशी है। कैसे हैं ये देखिए, कॉन्टैक्ट लगा हुआ है। अभी मैं सुनूंगा इनके डायलॉग्स, कैसे डायलॉग्स करेंगे। देखिए ये वक्त आ गया कि साद कुरैशी मेरे डायलॉग्स चेक करेंगे। और ये हैं कुबरा खान once again, Shizre sitting at the back. So guys, see you in a bit, and till then, lots of love, and we'll resume the song from there, right? Take care.